So if they are getting proper nutrition, if they are getting proper temperature, and if they are getting proper water and moisture, they will settle down on any other bread or maybe any other fruit or maybe any other cow dung, any waste, जहाँ पे भी उसको nutrition मिलेगा, it will get settled down. Again that spore will penetrate into that matter and give out its hyphae. Then hyphae will again elongate and form a sporangium, and that sporangium again, when it gets ready, it will burst and give out several spores. So this is how the whole cycle continues. Remember, we are studying reproduction, right? So spores हमने start किया था, and then again we have come back again to the spore. So this process takes place in your fungus or your bread mold. Okay, so now this was all about your asexual reproduction. Now let's move on to the sexual reproduction, where you would need a seed to produce a new plant. अब seed कैसे बनता है? Seed is formed by two different parents. You can imagine, right? Two different parents हम किसको बोलेंगे? One is the male and the other one is the female. ठीक है, सेक्सुअल कब होगा? जब एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, right? Now let's come to this. What is the male part and what is the female part in the plant or in the flower? So you have learned that flowers are the reproductive parts and stamens are the male reproductive part and pistil is the female reproductive part. Keep this in your mind. Stamen is the male part and pistil is the female part. I'll show you the figure. See, stamen, it has got two portions. The upper one or the pouch like is known as the anther, and this thin thread like structure is known as the filament. Anther and filament, anther and filament in your stamen. Then what is in your female part, which is your pistil? Pistil में तीन चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एंड ओवरी के अंदर क्या होते हैं आपके? ओव्यूल्स. ओके, जैसे यहाँ पे ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, वैसे ही आपके एंथर के अंदर होते हैं पॉलन्स. हेयर आर फिल्ड योर पॉलन्स. Now why I am telling you this pollen and ovule? Because these are mainly these are the main parts which will give rise to the actual male thing which is required for the production of seed. Pollens are filled inside the sac which is known as anther, and ovary is filled with ovules. Okay, now let's move on. Acha, now they have given you two types of flowers. One is the unisexual and another is the bisexual. So uni means one, bi means two. So as the name indicates, the unisexual flowers are the one which have either a male reproductive part or they have the female reproductive part. मतलब या तो फ्लावर में सिर्फ स्टेमन होगा या फिर फ्लावर में सिर्फ पिस्टिल होगा. लेकिन in the bisexual flowers both of them are present. Pistil भी होता है और stamens भी होते हैं. They have given you the examples. Corn, papaya and cucumber, they produces what? Unisexual flowers, whereas mustard, rose and petunia have bisexual flowers. Now what they are saying, what are the male and female gametes? So gametes are the things which are required to form a seed. जब आपको क्या करना है, एक नया सीड बनाना है, यू वुड रिक्वायर टू थिंग्स विच आर द गैमीट्स, और यू कैन थिंक दैट गैमीट्स आर द सेल्स विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल. तो ये गैमीट्स होते कहाँ पे हैं? एज आई टोल्ड यू, एंथर कंटेन pollen grains. These pollen grains produce your male gametes. आपके एंथर के अंदर जो पॉलन्स होते हैं वही क्या बनाते हैं? मेल गैमीट को बनाते हैं. And your ovary contains one or more ovule and the female gamete or the egg, female gamete का नाम होता है egg, which is formed inside the ovule. Now what happens in sexual reproduction? The male and female gamete fuse to form a zygote. जो मेल गैमीट होता है जो पॉलन के अंदर है और जो फीमेल गैमीट है जो ओव्यूल के अंदर है, they both will fuse together to form a zygote. अब लेकिन वो फ्यूज होंगे कैसे? क्योंकि मेल गैमीट तो एंथर के अंदर है ना, और फीमेल गैमीट तो ओवरी के अंदर है, ओव्यूल में.
बहुत दूर है, और कुछ फ्लावर्स तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल बिल्कुल अलग है, फीमेल बिल्कुल अलग है, तो कैसे उनका फ्यूजन होगा, कैसे जाइगोट बनेगा और फिर कैसे जाइगोट जो है वो आगे चल के सीड बनेगा. सो फॉर दिस देयर इज़ अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज pollination.